मैंने कंप्यूटर ऑन किया 8 बजे। क्या खेल रहे हो, लीथल कंपनी? तो होराइजन खेल रहे हैं। 8 बजे कंप्यूटर ऑन किया तो सीपीयू का पंखा चलना बंद हो गया। अभी तक कैसे चला रहा था, अभी मैं उंगली से उसको घुमा रहा था, हाँ। ऑन हो जाता था थोड़ी देर बाद। हाँ। अभी साला 5 मिनट खड़े होकर घुमाया मैंने उसको, वो ऑन ही नहीं हुआ। तो हैं? अबे सीपीयू कूलर का। रिवर्स हाँ, सीपीयू में कूलर बिजली का। नहीं जाएगी भाई, खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, ठीक है। तो मतलब मोटर होगी ना तो बिजली जनरेट करेगी ना वो तो। हाँ, तो वो तो, अरे तो अगर तुमने पीसी ऑफ कर दिया और उसमें थोड़ा सा घूम गया पंखा तो फिर खराब हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ा ना होता। मतलब हो तुम सकता मोटर है। को जनरेटर कैसे बना दोगे, समझ रहे हो? अरे कुछ तो लाइक वो होता है ना, रेमिनेंट एडी करंट इलेक्ट्रिसिटी रह बोलते हैं शायद जाती से है। उसको। ऐसा कुछ रह जाता है ना उसके बाद हाँ, भी। तो सुनो, तो आगे तो सुनो यार, ठीक है। उसको निकाल दिया मैंने, बाहर निकाला। जाके तो वो तो ऑब्वियस है कि प्रोसेसर तो बाहर आएगा उसके साथ में। प्रोसेसर भी बाहर आ गया। फिर सफाई सफाई करी, पंखा बाहर जोर से निकाला तो साला हाउसिंग के साथ में पीसीबी बाहर निकल गई उसकी। पीसीबी ने अपने साथ में तार खींचा तो हाउसिंग का एक जो तार, वो जो क्लैंप था, वो टूट गया तार का। और भाई साहब मेरी फट गई। मैं कहा यार अब साला इसको कैसे, या तो निकाले या कुछ तो करे। तो अंदर बाहर किसी तरह किया तो वो बाहर निकला। फाइनली बाहर निकला। तो उसकी सफाई करी खूब सारी मैंने। फिर उसमें सरसों का तेल डाला, मेरे पास में लाइट मशीन ऑयल नहीं है, तो सरसों का तेल डालना पड़ा मेरे को। उसके बाद में आके फिर मैंने लगाने का देखा तो देखा साला प्रोसेसर के पिन बेंड हो गए। ओ। ओ दो भाई पिन। साहब, अभी ट्रेजेडी हो फिर जाती है इसके साथ तो। हाँ, 2 पिन बेंड हुए तो उन दो को सीधा किया भाई कैंची से। अरे बाप रे। ओ, ओ, अरे ओ भाई भाई ये तो यार। सर्जरी लेवल काम हो गया भाई। एक बाप रे, गलत मिस्टेक, हार्ट आदमी बीट तो डेड, बहुत इधर तेज रहा सीपीयू होगा डेड। लास्ट कुछ मिनट्स में। हाँ भाई, बस अभी बैठा हूँ, मैंने कहा अभी लगा के देखे, मम्मी से बात कर रहा था फोन पर। नहीं तो अभी अनाउंस हो जाता, लो भैया ये रहा 15,000 रुपये का, 15,000 कह रहा हूँ, 20,000 रुपये का ये बिल, 8,000 रुपये का ये बिल, लो भाई खत्म। एक्चुअली पता है वो आपको मतलब कि मैं ये प्रोसेसर निकल जाता है ना उसके लिए वो है कि लाइक आप निकालने से पहले कूलर को थोड़ा देर कुछ तो, चलाओ पीसी को। अच्छा ओके। तो गर्म हो जाता है तो फिर वो लूज हो जाता है, क्योंकि अगर बंद है आपका तो वैसे भी पीसी बहुत दिन से बनता, हाँ तो उस टाइम बहुत ज्यादा चांस है कि एकदम चिपका हुआ रहेगा और फिर निकल जाएगा बाहर। भाई साहब, मजा आया भाई एकदम। मेरा भी जब मैं फर्स्ट टाइम निकाला था भाई, मेरा तो फट के फ्लावर हो गया था भाई, ये क्या भाई प्रोसेसर कैसे आ गया हाथ में साथ में। ये वो है भाई, वो प्रोसेसर से बाहर निकल के आ जाता है ना, वो एकदम मतलब होश उड़ जाता है उसमें। Rumors say that Fanghorn should गलत be बटन, nearby. अरे भाई गलत बटन। हील कैसे करता है? There's the thing. ओ भाई बहुत सारे I हैं। have to take it down. That's right. हेलो। आ गया। रीपर एवं अभी सर्जरी करके आ रहा है। बताएगा पूछो। ये अभी एक नया घोड़ा गलती मारा। और सीधे कितने का चूना लगता है तेरे को? 25,000 का एवं। 30,000 का है प्रोसेसर। क्या हो गया? अरे भाई ये कहाँ चला गया, वो पिन बेंट थे, मैंने मतलब मैंने ऑन किया अपना पीसी तो हाँ पंखा नहीं घूम रहा था। हाँ। तो मेरे को लगा कि चलो वैसे भी इसका कुछ दिनों से
जान निकली हुई थी उसकी, तो वैसे भी करना ही पड़ता है। वो साला क्या कर रहा है? Fuck! तो वैसे भी उसको निकाल के साफ करना ही था। तो क्या हुआ कि मैंने उसको निकाला, लगाने चला साफ ऑफ करके, तो पता चला कि सीपीयू का पिन बेंट है तो वो ट्रेजेडी हो जाती है आज। अभी भी तो लेकिन बैंड ही है ना। नहीं अभी सीधा कर लिया ना। क्या कर बेंट के साथ में तो तुम लगा नहीं सकते ना, लगा दोगे तो क्या बोलते हैं और बेंड हो सकता है। उसको बेस्ट है कि सीधा ही ऐसा करके। नहीं जैसे उसको खांचे में डाल दो तो अपने आप सीधा हो जाए वो लाइक। अरे तो खांचे में घुसना चाहिए ना। अभी तुम 800 पिन में से 800 तो नहीं, मतलब चलो हाँ बात 200 पिन में से भी बात तुम कैसे उसको बैठाओगे कि वो सारे के सारे साथ सेम समय पर खांचे में घुस जाए। हाँ बात सही बोल रहे दीदी। मैक्स पेन वाला टाइम है Should be able to harvest और the मैक्स पेन pig. क्या धीरे होता है? क्या ज़्यादा धीरे होता? मैक्स पेन वाला Got the fanghorn rib. Now I just need the charge. बुलेट टाइप। अच्छा बुलेट टाइम नहीं, ये तो कंसंट्रेशन है ना। आप बातों की गहराइयों को समझिए। ये बुलेट टाइम नहीं है, कंसंट्रेशन है। पकड़ पकड़ काट उसको। शिट 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 प्लस 28 क्यों दिखा रहा है भाई? प्लस 28 उसका डैमेज हुआ होगा 28 का। माइनस 28 दिखाना चाहिए ना, तो ग्रीन क्यों बन रहा है? नहीं अब मैं मतलब ग्रीन एरो आया ना उसके लिए बोल रहा ना। हाँ हाँ वो आई गेस इसलिए होगा कि मतलब ये वाला डैमेज इसको सही हुआ है, समझ रहे हो। मतलब एक होता है कि बेकार डैमेज, हाँ। वैसे वाला। क्रिटिकल हिट काइंड ऑफ। नहीं क्रिटिकल हिट तो अलग ही हो गया। मतलब कि Critical एक तो एक पॉजिटिव डैमेज हो गया, एक नेगेटिव डैमेज हो गया। मतलब कि जिस चीज में तुमको शार्प मारना चाहिए तुमने उसको ब्लंट मार दिया, वैसे टाइप का, समझ रहे हो क्या। मेरे भाई तो उसको एरो मारा और ज्यादा पावरफुल हो गया वो। हाँ न्यू इन्वेस्टमेंट एंड अनलॉक। क्रिट हिट इसमें बहुत क्रिट हिट इसमें आई थिंक येलो से आता है। चेंज क्या क्या कहाँ तक पहुँच गया दिखाओ ना। भाई एक ही दिन खेला है मैंने। डिस्को मैं डिस्को दूँ? विल स्ट्राइक। हाँ मेरे को दो जगह देखना पड़ेगा। हम्म अरे इधर पहुँच गए मतलब तुमने वो कर लिया खोल लिया ना बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना। नहीं अब हाँ मतलब वो लिफ्ट से आ गया नीचे। नहीं लिफ्ट से नहीं। नहीं वो वाला बॉर्डर नहीं हुआ है। मेन बॉर्डर नहीं हुआ है, लिफ्ट नहीं से हुआ नीचे ना। आ गया। लेकिन जो बड़ी अरे लिफ्ट है ना। वो तो मैंने कब तो उसी दिन देख लिया था वो तो। हाँ उसको थोड़ा एक कब आया advice तू? दे रहा आज भाई, आया? कुछ भी हो जो हाँ अभी 1 घंटे पहले ही तो आया हूँ। तुरंत फ्लाइट लैंड हुआ, घर पहुंच के ही किया। फ्लाइट लैंड हुई है 5 बजे, घर पहुंचा हूँ 7 बजे। अच्छा 2 घंटा लग गया। भाई ये तो वही हाल हो गया बैंगलोर वाला ही तो। भाई थोड़ा घर थोड़ा और उधर की साइड ले लीजिए यार। लेकिन देखो ऑफिस जाना नहीं है तो भाई एयरपोर्ट के बाजू में ही घर ले ले। एटलीस्ट एक यही एक बच जाएगा तेरा। महंगा पड़ेगा भाई एयरपोर्ट के बाजू इसको। न ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हिंजा बड़ी ज्यादा महंगा पड़ेगा आई थिंक। बैंगलुरु। क्या करना था मेरे को? अच्छा ठीक है, इसमें क्या फीचरिस्टिक है मेरे को ये बता। इसमें जानवर नहीं है। अभी आएगा आएगा अभी अभी नहीं है अभी आएगा आगे आएगा। नहीं वो जानवर तो लग ही रहते हैं मेरे को। अरे वो सब काइंड ऑफ है। रुक जाओ थोड़ा अभी इसको एक दिन और खेल लेने दो तब आएगा सब फ्यूचरिस्टिक। अरे नहीं तो इसके बाद पहले पार्ट से रहता है ना वो चीज कुछ फ्यूचरिस्टिक वाला। अरे वो तो होलोग्राफिक है वो भी आई थिंक वो भी अपग्रेड होगा। क्या चश्मा है क्या है वो? हाँ वैसे चश्मा टाइप नहीं का है वो कुछ है क्या कहते हैं। मतलब उसको डिस्प्ले मतलब दिखता है अलग अलग चीज। व्हाट्सएप डिस्प्ले। ये उसे क्या कहते हैं ये बे वो हॉलो। विजन प्रो है उसका। हट हाँ 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 एप्पल विजन। हाँ हाँ विजन। विजन विजन अल्ट्रा प्रो मैक्स है भाई। व्हाट्सएप डिस्प्ले भाई। अरे हाँ एवं इसमें मैं तेरे को एक एडवाइस दे रहा भाई कुछ भी हो जाए जो सामने आया वो पटक पटक के मारो। खूब पैसा कमाओ भाई बहुत machine hunter होने that वाली है bailed out the इसमें। Karja. Never heard it put that way before. मैं कम से कम और भाई अच्छा Heard चलो you've been वही ठीक है। hassling अरे ये वाला refugees था। up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed it myself with the harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it?
No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Carja lovers. On your blasted way. ये तो भगा दिया। Go to Twilight Karja camp. इसमें कैरेक्टर का लेवल होता है क्या? कितना लेवल है आपका अभी? 6 है क्या? हाँ, उसके बाजू में मेरा पैसा है। दिखा के हेड्स अप डिस्प्ले दिखा। ये अच्छा, वो जो पहनी ऐसे उस अपने सर पे वही है ना? हाँ, नहीं, साइड पे कान रहता में, है, कान पे वो लगा जो हुआ है। चमक रहा है जो। चार्वी छोटा सा रहता है एकदम। वो देखो वो रहा। वो चालू का हाँ, तो वो चमकता छोटा है सा ना वो। ट्रायंगल था। और वो चमकता है। हाँ। अरे उसमें जब तुम फर्स्ट वाले गेम में ना अल्ट्रा हार्ड और मतलब हार्डर डिफिकल्टीज पे बीट करोगे ना, तो इसका जो ये कलर है, ये कलर चेंज हो जाता है और बड़ा हो जाता है। जो वो ब्लू ब्लू सर्कल बना हुआ है वहाँ पे, वो वो डाले साइड में। अच्छा वो नहीं हो सकता। ये तो काय है? हाँ इनको मारो। अरे हाँ एक तो इनको जाना इनके पीछे। अरे इनको उससे ना मारो। क्या किया भाई ये? ओवरराइड टीम कर ये लिया। भैंसा है भाई। पैसा बना दिया भाई उसको भाई। रैम है वो, रैम। अरे हाँ एवं इसमें तुम स्टेल्थ में जाओ ठीक है, क्या बोला? और इनके खोपड़ी पे वो मारो जाके। इनके हॉर्न तोड़ो। इनके हॉर्न लेजेंडरी पार्ट्स हैं। तेरे को बहुत अरे पैसा तो आप इसके ऊपर बैठे हो तो दूसरे वाले मारेंगे नहीं क्या? मारेंगे। गुस्सा हो गया था ना पीछे वाला। देखो उस आवाज में वो देखो। अपना ब्रेदरन लेके भाग के बोल रहा होगा वो। हाँ, आया भाई पैर में उसका गोल किया फिर चला गया भाई। तो इसका ये ऑटो रन वाला सिस्टम मेरे को बहुत बेकार लगता है। कहाँ जा रहा है? ओ चलो, थैंक गॉड। हाँ बहुत बढ़िया। भैंस अरे इसमें आगे रेस है भाई, ये भैंसा लेके दौड़ाना भी होता है तो थक जाते हैं। तो ये समझ पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है ये। हाँ अरे बिल्कुल। हाँ एवं ये सेटिंग्स में जाओ। इसमें एक सेटिंग है, वो भैंसे को जब तुम टकराता है ना तो अपना बाल फेंक देता है, तो वो मतलब भैंसा अटकता नहीं है अपनी वो एक जगह पे। अब वो मुझे एग्जैक्ट सेटिंग नहीं पता है, लेकिन वो चेक करो गेम प्ले में होगा आई थिंक, या होगा गेम कि प्ले तो मतलब कुछ है ही नहीं वो- इसमें। अरे मतलब वो माउंट का कुछ सेटिंग है। वो तेरा माउंट फॉलो ओह फॉलो रोड दिखा। ऑटो पिकअप। ये थैंक गॉड। थैलेसफोबिया रिलीफ क्या है वो? थैलेसफोबिया क्या होता है? थैलेसोफोबिया होता है फियर ऑफ द अननोन। हाँ ये माउंट फॉलो रोड नहीं कहाँ है पे? अंडर वाटर विजिबिलिटी अलाउइंग यू टू ब्रेथ। वो मैंने ऑन Definitely. किया था ना, तो माउंट जब वो लड़ता है तो अटकता नहीं है। ऊपर वाले को ऑन करके साथ तू बहुत टाइम तक वो ले सकता, सांस ले सकता है। इनफिनिट सांस ले सकता है इसमें फिर तू। अरे इसमें अभी इनफाइनाइट साइंस वाला मिल जाएगा, चिल मारो। On this feature on to ease thalassophobia symptoms by improving underwater ambient visibility and allowing you to breathe indefinitely, regardless of story progress. नहीं छोड़ देता ओह हूँ। दैट इज क्या लेकिन ऐसा सेटिंग क्यों दिया है? अरे मतलब थोड़ा इमर्सिव अगर होगा ज्यादा तो लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक अटैक्स पड़ने लग जाएंगे ना। थैलासोफोबिया मतलब प्रॉपर कह रहा हूँ, प्रॉपर फोबिया है ना, जैसे उसको है क्या नाम है, सबनॉटिका में ही। क्या हाँ मतलब कि क्या होता है क्या? पानी थैलेसफोबिया का क्या है? डर। अरे मतलब पानी का डर नहीं होता थैलासोफोबिया, डूबने का वाला। वो भी नहीं होता है। तो- थैलासोफोबिया का बेसिकली मतलब होता है कि फियर ऑफ द अननोन, कि आगे क्या है भगवान जाने, कुछ है ही नहीं, पता नहीं कुछ है और फट रही है उसको, है कि नहीं कदम है। ही नहीं रखना है। मैं सबनॉटिका रखूंगा बुम्बा तो देखा था क्या तुमने? सबनॉटिका देखा था, उसमें देखते ना पूरा एकदम काला है, सीधा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ वो थैलासोफोबिया ट्रिगर करता है। ओके। कि आगे क्या होगा। अच्छा तो इसमें वो दिखेगा अच्छे से, लेकिन सांस वाला का लॉजिक क्या है? मरेगा नहीं आदमी तो? पानी के अंदर वो नहीं रहेगा, ना मतलब फिर तो, टेंस नहीं रहेगा ना मोमेंट। अच्छा ओके ओके। कि तू सांस के कारण मर जाएगा करके। मोमेंट की मतलब मोमेंट को स्ट्रेसफुल नहीं बनाना बेसिकली। हाँ समझ।
अंदाजा होगा दे। These people are under attack. Hey! You up there! Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for change rate. ठीक है, हाँ अच्छा तो वो फोड़ो वो जिसके सर पे वो लगे हैं वो एंटलर हाँ भाई जाली टाइप के जो हाँ तो ये लेजेंडरी पार्ट है तेरे को बहुत पैसा देंगे हटा पे मार मुंह हटा अपना ये बढ़िया है कि मेरे को मार ही नहीं रहा तो इस वक्त में आपके फ्लेम थ्रोर निकाल लेगा। बोले मैं क्या बोला था गुस्सा हो रहा है भाई थोड़े More machines on their way. व्हाट ओ भाई कौन डर गया अबे कितना लंबा है भाई कंसंट्रेशन Get to safety. I'll handle the rest. अरे चार्ज करना इसके सर से नहीं मारता भाई नहीं मारना चार्ज। Always wanted to see the savior of our ट्रैप पे Meridian in action. फट जाएगा तुम मत घुस जाना ट्रैप के अंदर तो उतरते कैसे हैं ओ बाट अरे भाई मैं वो दबा रहा हूँ पता है एल्डन रिंग का बटन अच्छा that's it. हाँ इतना खेल लिया कि मतलब अभी तो भूल ही गए क्या हो अरे भाई इतना अजीब है ना दोनों का सिस्टम एक्चुअली हाँ तो क्या वो स्विच पे इतना अच्छा दिखा रहा है मैं डिस्कॉर्ड पे जो डिस्कॉर्ड अभी एटलीस्ट 720p है 60 तो FPS हाँ मतलब हाँ 60 सॉरी 60 fps है तो स्मूथ तो दिखता है एटलीस्ट क्वालिटी तो तो अच्छा है गेम तो अच्छा इन्होंने 60 FPS कर दिया क्या नहीं वो आकाश सर्वर आकाश ने boost बूस्ट किया सर्वर इसमें आप बहुत कर सकते हो लेकिन उसके लिए बूस्ट करना पड़ता है सर्वर अरे एक टाइम था अपना बूस्ट भाई बहुत बूस्ट था लेवल 3 में था अपना 1080p 60 भी हो सकता है उससे ऊपर भी जाता है शायद नहीं उसके ऊपर 4K भी आता है क्या पता नहीं That's the last of them. देखना तो Better check it out. 1440p है सर्वर बूस्ट का फायदा क्या होता है वैसे ऐसे ही बस सर्वर बूस्ट होगा तो ये सब चीजें अनलॉक हो जाएगा फिर अपलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगा और इमोट्स वगैरह एक्स्ट्रा आ जाएंगे परमानेंट तो बूस्ट होता नहीं होगा एमपीटी हाँ नहीं मंथली रहता है 1440p है इसमें लेकिन किस पे जाएगा वो मेरे ख्याल से लेवल 3 के बाद खुल जाएगा अरे उसमें लिख के आता है क्योंकि लेवल 3 है मैं मर गया जिंदा कर दो अरे मर गया मर गया भाई कहाँ जिंदा होगा वो भाई जिंदा ही कर रहा था मैं उसको मर गया वो जिंदा कर रहा था हाँ जिंदा अच्छा बैटरी तो होगा लगाना है बस इसमें यार इन लोग को हाँ तुम्हारा टीवी को मैं फोड़ देता हूँ फिर बताना रे बिजली तो डाल दी है इसके अंदर बस कोई बात नहीं प्लग लगाओ बस ठीक भाई तेरे उसके साथ में चेन सो लगा था उसके सर में हाँ तो वो अपने चेन सो से गड्ढा खोदता है ना अबे आगे जाओ अभी ऐसे ऐसे वियर्ड प्राणी मिलेंगे ना इन्होंने बहुत नए नए प्राणी ऐड किए वही तो बात है भाई उसी के लिए तो गेम खेलना है Lie still. Is it bad, Lokasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes, we know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said,
And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja and Our lives there were... Savohar saw our lifted us up, protected us from the corrupt priests and... When their rule ended, Savohar led... The long night ends. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to... क्या हो गया? बोलने दिखाई देता हूँ। Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new... Uh-huh. There's an Oseram in Chainscrape, Tolland. Yes. He was here just yesterday. He made all manner of... That's all well and good, but sooner or later his whole gang... Savohar will come through. He always does. You're out of time, Lakasha. We won't leave him. Well... Your priest, Savohar. His meditation. So he does this often? Well, but he will guide us through. Sure. But Shelter looks like a more... Look at yourselves. And Oseram thugs are watching you. You're in danger here. You need to... Our situation... This is... I know we cannot stay here, but without Sabo... Let me up there. And I'll convince... But his meditation... If he had... At least let me check on him. Yes. Yes, that the trail up to the towers. Savohar is strong, but it could not have been an easy... It rarely is. Let the Nora pass. आवाज रिपीट हो रही है। भाई कुछ बोला ही नहीं कोई, रिपीट कैसे हो गया? अरे गेम का साउंड आ रहा है शायद। भाई मैंने साउंड बंद रखा है, इसका गेम का साउंड मेरे उस पे नहीं आएगा, मतलब इसका साउंड म्यूट है। Oh. Craft item cannot be crafted. तो बाद में मिलेगा probably. Please, check on Savohar. Refreshing. Yes. क्या है ये? सीढ़ी है। Part of the ladder. Akasha was right. The trail's in bad shape. This looks recent. Must have broken off when Savohar climbed up here. Can't jump down the ship.
think I can reach those beams if I jump against the cliff. Okay, now how to climb higher. Damn. I gotta get back up there. Hi. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. That's a lot of blood. Savohars? He must have hurt himself pretty bad getting over the bridge. It's not looking good. Looks like he left a trail. There's the Stormbird. Getting closer. Machines. Sabahar must have snuck past them. I could probably slip past them. Or take them out. Cauldron? I think I had to override this machine. और अरे उसे गले में मारो तेरे को अपने हाँ ये तो चल रहा है वो साउंड शेल तुम लोग को आई थिंक वो उसके लिए जरूरत पड़ेगा वो साउंड शेल आई थिंक कंप्लीट है तो वो उसके गले पे रखता है हाँ ये चमक रहा है नहीं मिला ना नहीं पर्पल पे गिरा तो था नहीं हट गया है भाई इसमें तो उसको भी नर्फ कर दिया इन लोगों ने अबे याद है वो जो डायनासोर मारते थे अपन उसमें हाँ टीयर वाला टीयर ब्लास्टर हाँ नहीं टीयर ब्लास्टर नहीं अरे मतलब डायनासोर वो जो बड़ा सा था मतलब हाँ थंडर जॉ नाम था उसका थंडर जॉ हाँ थंडर जॉ तो थंडर जॉ का गन गिरा दो हाँ ठीक है पिस्टल तो लॉन्चर उसके गन से ही तुम उसको ठोक सकते थे हाँ उसमें कम से कम 12 गोली होती थी हाँ अभी उसके गन में गोली नहीं होती भाई 2-3 होती उससे कुछ होता ही नहीं उसको नॉट एनफ स्किल पॉइंट्स आई थिंक इसमें लो इसमें जाओ हंटर वाले में जाओ तेरे को हंटर वाले में वो 3 एरो या 2 वाले एरो वाला कुछ वाला है वो आई थिंक पहले ओपन करो
ये रहा नीचे है देखो, नीचे की साइड है देखो, वहां से ओपन करो। बाद में करेंगे। There's Sabohar. In pretty bad shape. The true sun above me. Sun above me. You must be Sabohar. True sun before me. Show me the way this eventide. No. No. The vessel. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. My pain. You're hurt, bad. Staring at the Stormbird isn't... You don't understand the omen. I just need to see the twilight path. Listen. Lakasha is doing the best she can. Angry Oseram. The Order... The last rays of even. I don't think so. What do you think's gonna happen? If you sit long enough, the sun... Fall. Or some Oseram shot it, and it hit an old tower. Look, I think you punctured a lung. The sun. I'd be more concerned about losing blood. Your people are worried about you. Purity. True sun above me. I think you've been staring at your salvation. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. Stormbird heart is valuable. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? That was the intended way. Strong smell. आपस में घूम के आ गया। The Oseram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. There. The Order should be able to...
अच्छा Towards shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. Savahar? How you holding up? डेड I need to get back over there. वाह Savahar? I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. Come on. Don't make this difficult. Get out of I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Carja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Tolland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or Shadow Carja fleabags. I'm taking it. Okay, so you clipped the Stormbird. But it's brought you nothing but trouble since. Refugees, squabbles, me. Might be hard to swallow, but it's time to cut your losses, don't you think? Come on, boss. It's not worth it. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to Chain Scrape. I need a drink. Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard. But your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the forge woman there, Petra. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. Let us to Chainscrape then. बहुत सारा सामान दे दिया हे भगवान हाँ रामू कौन सा बोल रहे थे क्या बोल रहा? कौन सा बोल रहे थे तुम ये वाला बोल रहे थे क्या श्रेडर है ये नहीं 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 लेफ्ट में जा लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट तो ये तो हंटर है ये वाला
हाँ हाँ, इसमें नीचे जाओ थोड़ा सा। ये वाला है क्या? ये भाई डाल सकते नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। मतलब जूम आउट करो। हैं। आई थिंक ये है, हाँ, ट्रिपल। यस, ये वाला। और एक बार थोड़ा और लेफ्ट में जाओ। ये वाला भी इधर जाओ, इसमें है जो एरो लास्ट वाले का, देखो 3 बने हैं। आई थिंक यही है ना, ये 3 वाला, ये देखो। ये नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसके नीचे, इसके नीचे। अरे यार, लेफ्ट में ये कॉर्नर, हाँ, बड़ा वाला जो है, यस। वॉरियर बॉ का है ये। अच्छा, वो वॉरियर होगा। हाँ, तो मैं वो 3 वाला बोल रहा हूँ जिसमें 3 एक साथ लगा लेती है, तो शायद एक बार में तुम ज्यादा डैमेज कर सकते हो। और इसका एक फायदा भी है कि तुम अपने एरो पे 3 लगा के एरो चेंज कर सकते हो, तो वो 3 लगे रहेंगे आई थिंक। Be careful not to let this stain my hands. क्या Charger horns. Watch where you're going. Look at her go. There's a horn. अरे पागल हो रहा है वो। अरे हाँ, इनके 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 जो वो है ना, ये क्या कहते हैं, घूमे घूमे से जो है हॉर्न्स। ये। हाँ, गिरा सकते हो, ये येलो येलो पार्ट्स हैं भाई, अच्छे पैसे में बिकते हैं। और इसका हाँ साउंड है, यस। एक और फार्मिंग स्पॉट बताएगा, ये अच्छा फार्मिंग स्पॉट है क्योंकि तुम्हें काफ़ी बार ज़रूरत पड़ेगी इसके हॉर्न्स की।
साथ पड़ता है? नहीं वो मर गया, इसे ही मिलेगा मुझे। I'll save the extra stock for later. तो अच्छा ब्लू है, येलो येलो इसका होता है। हाँ थंडर जॉ की टेल येलो है। अभी मैंने पूछा था बॉर्डर पार कर लिया कि नहीं। बॉर्डर पार करने के बाद मुझे बहुत अच्छा स्पॉट है, जैसे लो लेवल पे तुम थंडर जॉ फार्म कर सकते हो। मैंने कम से कम उसको 12-13 बार मारा था जाके खूब पैसे कमाए थे। फिर जाके मैंने बो वगैरह बहुत खोले थे। और इसमें तुम एक चीज़ इसमें है कि तुम जो अपग्रेड करने वाला वो है ना, तो वो क्या कहते हैं उसे, वर्कबेंच। ये हाँ वर्क बेंच। तो वर्क बेंच में तुम बेसिकली तुम सब कुछ खरीद सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सारे अपग्रेड खरीद सकते हो एनिमल पार्ट्स के अलावा। तो जिसमें वो पेल्ट वगैरह चाहिए होती है ना, सुअर को मारो और रकून को मारो, वो अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो अच्छा। आओ ये You've got मिशन all the अच्छा है, parts, haven't you? नाइस मिशन। इसमें तुम्हें बहुत बढ़िया चीज़ Here you मिलेगी। go. Outstanding! I only need a few minutes to finish the prototype. I'll take the version that won't blow my arms off. Thanks. You didn't like that joke? Hi. So did you blow up any machines to get the parts? Or any bandits? You really like explosions, huh? Here we go. With the boomsticks? Oh, you betcha. Is it safe? Probably. Can I have one? No! Oh, Because we're gonna make you something even better. ba-boom! What about a rope caster? But ropes don't explode. हो गया क्या मिशन? मिला वो हाँ, डंडा मिल कुछ गया। भाला टाइप का दिया होगा। हाँ। लगा लो, बहुत सही चीज़ है भाई, ये बहुत काम आएगा तुम्हारे ये। नहीं चाहिए इसके लिए पापड़। लेकिन वो प्रायोरिटी रखना होता है, वो बहुत काम आएगा। चलो भाई फाइनली हम लोग मेन शिफ्ट करने जा रहे हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा है, एसी चला ठंडा हो जाता है, एसी बंद करो गर्मी से गान कर जाता है। तो एसी ज़्यादा पे चलो। तो ऑफिस पे चला रहा हूँ बिल्कुल लो पंखे पे। 26 पे चलो। नहीं गरम ही हो गया, पंखा बंद कर दिया। ओह ट्रांसफॉर्मर। आई थिंक इधर एक वो है विंटेज पॉइंट, आई थिंक इधर नहीं है। हाँ ये वांटेज पॉइंट है। वही वही बोल रहा है। वो अपना ऑन करो, फोकस ऑन करो। नहीं फोकस ऑन करो, An अपना image from दिखाएगा। the इसमें robot. वांटेज पॉइंट सेटल करना पड़ता है। Looks like some Yes. kind of building. तो अब ये in front of तुम्हें वहाँ पे sheer ऐसा पजल cliffs. लगाना है। The image is incomplete. But maybe if I line it up ऐसा नहीं, देखो, exactly with where it was मैं taken, बता सकता हूँ कहाँ पे है, my लेकिन focus can अगर fill in मैं the बोलना- rest. यहाँ पे नहीं है, तेरे को थोड़ा साइड में जाना। पहले वो घर के डायरेक्शन में देख। घर गए हो ना तुम कि नहीं गए हो? ये वाले घर जो दिखा ये रहे घर यहाँ पे है। गए हो ना? नहीं तो आई वुड सजेस्ट Nope. इधर फिर तुम्हें I पीछे should जाना है, इधर find नहीं another जाना। spot. वांटेज पॉइंट पीछे की साइड है, थोड़ा ऊपर चढ़ के इस साइड। हाँ इधर 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 देख रहे थे तुम्हारे Looks मतलब like the building in लेफ्ट the में image yes, might have ऊपर been चढ़ near के a कहीं river. पे।
तो एक्चुअली There used to टूटा be हुआ a पुल bridge का nearby? रास्ता है वो। हाँ तो वो पुल दिख जाए तो वो भी जाएगा। हाँ ऊपर चढ़ो, आई थिंक वो पत्थर वत्थर पे चढ़ो, यहीं कहीं से है वो। इधर से नहीं, मैं भाई तेरे को घर दिखना चाहिए ना, मतलब बेसिकली तेरे को घर पे और वो पहाड़ को उस पे फिक्स करना है। चेंज कर दिया ये लोग। हाँ इसमें चेंज कर दिया, यस। अब आई थिंक मिल तेरे गया, को मिल रास्ता गया। है, यहाँ कहीं पे रास्ता है, इधर है, यस। इधर लगाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, हाँ थोड़ा और Ruins आगे of the जाओ। bridge. Maybe it's the same one from the image. I could नहीं try नहीं to line it नहीं, up around here. फिक्स होना चाहिए बिल्कुल उस पर। आई थिंक इधर ही है, तेरे को मतलब थोड़ा सेट करना पड़ेगा, लेकिन I think I'm getting इस साइड close. से ही है। पहाड़ नहीं मैच कर रहा है। बस और घर के अंदर चले जाओ, घर के अंदर तुम्हें सामान अच्छा खासा मिलेगा। ओह आई नो आई नो, नो नो आए हुए, तेरे को उधर जाना है आई थिंक, इधर नहीं है। ए वो पीछे वो टावर दिख रहा था ना, वहाँ जाना है आई थिंक। वो देखो वो टावर, वो साइड में वो टावर। आई थिंक सो। कुछ हाई जगह पे, ऊंची जगह से वो तेरे को वैसा दिखेगा। एक बार घूम के चेक करो, उस घर को पजल पजल लगाना है। नहीं I बहुत lost the दूर vista है point ना। image. Gotta stay in the right area and try again. लॉस्ट बोल दिया। I could try to line up the vista point image again. Should be within पुल का ही reach. है ये, देखो यही पुल है जो Okay, दिखा let's try रहा है this उसमें। again. और तेरे को बस पहाड़ और घर उसमें Some फिक्स sheer करना है। cliffs. किया था, मेरे को पत्थर नहीं आ रहा जिसमें मैं लटका रह जाती हूँ। तो भाई ये बहुत इरिटेटिंग हो गया फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ये नहीं सुना। इनका छोटा भाई था, वॉचर था। ये वाले बहुत इरिटेटिंग है। वॉचर है ही नहीं इसमें, नहीं हाँ, है ऐसे ही। नहीं है, नहीं है, मतलब हो सकता है वो। देखो घर फिट करो उसके अंदर, घर को मतलब जो घर का जो कोना है ना, तेरे को वो कोना दिख जाएगा। बदल बदल है समझ लो टाइम हो गया। Got it. Completing the image unlocked a data file. Looks like these vista points were made by Miriam Technologies. That was Elizabeth's company. I wonder if I can find more of them out in the wild. Let's do it. It's a ruin from the old world. But I could find something interesting inside. Okay, what do we have in here? मस्त पजल है ये घर का, करो मजा आएगी। मेरे से तो मेरे को गूगल करना पड़ा, मेरे से आखिरी वाला नहीं हुआ था।
कितना भारी पैर है बे। भगवान है भाई। Mighty thankful to you, Savior. Just Aloy is fine. Aaron mentioned you're not one for fancy titles. Your vanguard. Captain said to keep an eye on Chainscrape. So we've been cleaning up any bristleback carcasses we find. Didn't want them attracting any of their scavenger friends. Would have been an easy task too if someone hadn't slipped trying to move the damn things. Scroungers showed up while I was trying to free this scrap brain. Forgot to bend the knees, that's all. Here, my thanks for helping us out. These should be handy in a pinch. Thanks. Make sure you don't go tripping under any more bristlebacks. Stay safe, Aloy. Looks like this door needs some kind of key module. Maybe there's one in the ruin? Got some data here. There's a code for the locked door in this data. But I still need to find a key module. Great. That should be useful. किचन सप्लाई जस्ट में बेरीज पड़ी हैं। अबे हाँ इसमें भाई तुम ऐसे ऐसे पुरानी जगह में बेरीज मिलेंगे ना, मैं मिला भाई बेरीज सड़ती नहीं है क्या? इमॉर्टल बेरीज। बेरीज सड़ती भी नहीं है और उसको तुम खींच सकते हो आई थिंक। हाँ वही मुझे भी लग रहा है। उसमें देखो छोटे छोटे से बने ना। वाह चला गया। अरे अरे कहाँ क्या व्हाट? Okay, gotta find a key for the door. भाई फिट कैसे हो गई ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। Okay, man. There's more of the ruin down here. Where to now?
goes. Ah, okay. That makes sense. Okay. Where does this lead? ओ मिल गया रास्ता तुम्हें? नाइस। मेरे को नहीं मिला था भाई। वो लास्ट जो था ना मेरे को गिराने वाला वो नहीं समझ में आता। बालकनी में जाना। बालकनी में जाना। The key module. Okay, let's see if this key fits. There. Looks like this needs a code too. I think some of the data I picked up might help. कौन सा कलेक्टेबल है भाई जो दिख नहीं रहा मुझे? दिखा दिखा पीछे दिखा क्या था? आई थिंक तुम्हें सीड मिलेगा यहाँ से कुछ। अच्छा हाँ इसमें कोड होता है। ये रहा ऊपर 1705। वाह There we go. ये तुम्हें सारे कलेक्ट करने हैं। अलग अलग जगह अलग अलग होता है। फिर कुछ Guess बेच I'll के figure तुम्हें out what to सामान do with it मिलता है। later. किसी को ट्रेडर को देना होता है। तो स्किल पॉइंट भाई साहब ऐसे तो इतना जेनरस है। हाँ देख रहे हो स्किल ट्री कितना बड़ा है। हाँ वही तो, मैं तो जब पहली बार स्किल ट्री देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। स्टिल वालाला का स्किल ट्री और बाप है भाई। भाई वालाला का स्किल ट्री यूजलेस है। अरे खत्म ही नहीं हो रहा भाई। मैं परेशान हो गया भाई। बस खेलना चालू कर दिया क्या उसको? नहीं भाई अभी मैंने आईडी चेंज कर ली है तो अब जो भी होगा मैं वापस से खेलूंगा भी तो मेरे को वो वापस से पूरा शुरू करना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना कूदा नहीं है भाई। ये मारो उसको मारो। ये कूद के जा रहा है जो ये क्या है जो भी उछल रहा है। छोड़ दिया उसको। रैकून अब एक्चुअल मिशन करते हैं यार। मिशन करो। मिशन करने के बाद ना आई थिंक काफी चीजें खुलती हैं। मिशन भी भाई बहुत बकचोदी है। करो वो काफी देर चलेगा मिशन। कुछ इसके लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आते। ये बंदी मतलब क्या दिखाया है इसको लेकिन ठीक है हम मान लेंगे। मेरे को सबसे बड़ी खतरनाक चीज तो मेरे को ये समझ नहीं आती है कि 1000 साल बाद भी ना ये लोग एग्जैक्ट सेम वर्ड यूज करते हैं तीनों के लिए। मशीन इज मशीन, की इज की, ये सब चीजें। अरे हाँ अभी तो तुम्हें पहला इनकाउंटर होगा उससे। वो जो क्या होता है मेगा बॉट। उसका नाम भूल गया था। नहीं बताते तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। नहीं मतलब ऐसा इनकाउंटर नहीं होगा बस ऐसा ही होगा। तो ज़्यादा उम्मीद ना रखो। मैं बहुत उम्मीद लेके गया था फट गई थी मेरी। मतलब थोड़ा वो हो गया था कि हाँ यार अच्छा दूसरा तो तुम्हें पता ही है। Karja Horn. ये आप मिशन लेके आओ कि डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हो कि पहले से दिखा देंगे? ये वाला जो लोकेशन है आई थिंक ये जो मिशन है ये मेन मिशन है। ये लेकिन पहले तो नहीं दिमाग था ना। कहीं से कहीं बात की होगी तब आया होगा ना ये। अरे ये एक्चुअली कुछ नहीं था ना हम लोग कर नहीं रहे थे इसको।
हाँ स्टार्टिंग से था। हाँ स्टार्टिंग मतलब जब तक जब हम लोग उधर गए ना, वो मिशन किया हम लोगों ने उसका, वो बंदे का, एक बंदे का कौन है वो मैजिस्ट्रेट वाला जो था ना वो, हाँ वो जो अपना उसके बाद आ गया था ये। था। Hey, what happened here? What do you care? Don't you? As it happens? No. You know, I was already having a crappy day, and now these two idiots picked my shift to climb the damn mountain. Wouldn't be so bad if this one weren't so heavy. Wait, 2 idiots? Did I stutter? Yeah, 2. Heard another one shouting up top. Sounds like they got caught between sharp claws and a sharper fall. Someone's in trouble. Aren't you gonna do something? Self-inflicted. And I got my hands full with this one. You're seriously not going to help. You seriously are? Someone's in trouble at the top of the cliff. I better get to climbing. Alright, I should find whoever's in charge here. Might be worth taking a look around, too. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Maybe. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the smoke? बंदा 10 साल गया Terrifying. But I carry out most of my business in no man's land. Neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Guaranteed. All right. Maybe later then. If you could get those blasted gates open. Guess I'm not the only one who wants to get those gates open. There's Erend. Looks like he's had a few. Savior, I need your help. Don't embarrass yourself, soldier. Savior! Savior! For the love of Dawn, Conover, give it a rest. Are you lost? Gentlemen? That's our cue. You taking the edge off? I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? All right, now let me guess. You're in a rush, right? So, whatever you need, ask away. I was, Yeah, we did. Just seemed half of the motor a favor and the other half... Yeah, in the end, everybody drank. You know, that's the rowdiest funeral since... Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight. Damn straight. How have things... Your silent departure? And I helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the claim. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple more of these, maybe I'll believe you. What do you know about the embassy? I know not much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these
But from what I hear, they're not too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. I'll keep that in mind. What do you know about this place? Well, nothing good. They took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the sun. For sacrifice. You got it. Tenakth made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the west. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. And no matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. Oh, yeah, don't let me stop you. Just, are you sure about this? Saving the world, that sounds like a lot for just one... errand. Yeah, all right. Can't blame me for trying. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me... I know where to find you. Hopefully sober next time. Yeah, don't count on it. Be careful out there, Aloy. Boy, slag. Savior. You're my left. Conover. She's Meridian's. It's just Aloy. Please, no one will listen. Really, Conover? Aloy's the one that did. You're bothering her with this agua? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Loravik, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Loravik, Unfortunately, there's no hard evidence that connects Loravik to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Loravik was working with the Eclipse? well, I was too far to hear everything. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of... A dozen soldiers have already searched it, Conover. There. I can see things others can't. Thank you, Aloy. Don't get your hopes up. Lighten up, Paiv. You've got a thick wall of stone between you and the Tenakth up there. Are you in charge around here? Ah, apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Waris is here, we can finally get things underway. Ah, yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tenakth marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen, once the Tenakth have left. So what happens at these? Mostly trade and negotiation. The Karja offered tribute of food, spices, and gear. In exchange, that fell during the Red Raids. This particular embassy, however... Because the Tenakth are handing over some sort of prisoner. Ah. The exchange has got everyone... You never know if an embassy's going to go well until it's... You said something about Tenakth marshals. They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then,
during the proceedings and negotiate. And by negotiate, I mean Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Where is this commander? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open. I'll take you to him, but the commander isn't one to break protocol, especially when he's... We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvin was thrilled. Stand aside, soldier. Sir? There's the commander. Better brace yourself. And good luck. How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ahem. Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh's horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Someone approaching! On a machine! Varl. Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. Sir, it's the Savior! I don't care if it's the Dowager Queen herself. The gate stays sealed until that horn blows. I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to Open stand in her way. the It's not gonna work. gates. Oh, that's it! Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let her through, boys. Saving the world. बाल को तो इग्नोर करती है एकदम. Got something back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time. This tribe that Murad told us about, the Tanakh. We need their permission to go west. Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole भाई time. HDR पे खेलो But भाई. this embassy hasn't सही started बता yet. रहा हूँ तब लगेगा जोरदार. We're just gonna barge in. Just no more politics.
No more delays. Oh well. अरे एवं मेरे को ये Now बता at जो least you इसके have some कान में तू backup. बता रहा था वो क्या बोलते होलोग्राफिक वाला तो उसके पास भी है वो तो हाँ I guess I do. हाँ ये सबको दे देती है We'll see उससे how it निकाल goes. निकाल के अपने उसे क्या कहते हैं एंशिएंट के डंजन Ancient ruins. रुइन से टेक्स्ट बहुत नहीं लोग है तेरा करते ये करते रहो। That is the line between East and West. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold. Ashram Pasha. She's telling the truth about one thing. She's not Karja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am Unyielding Fashav, once of the Karja High Command, last of the army of the Setting Sun. You're Fashav. Avad gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was polite. Well, now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association with the Karja could work against you here, as it often has with me. As you can see, tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. I've never seen markings like those. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, a litany of deeds. Looks like you vanquished. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, this side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. How did you come to be? It's quite a story, though I suppose neither of us is going anywhere. Are you sure you want to hear it? I guess we have. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders, hoping to moderate their... I failed. They committed unspeakable atrocities. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar, I stayed behind to help the last and was taken prisoner. I didn't make it easy for my... and they paid me back in kind on the journey to their... I lost so much blood on the way that I was the corpse when they threw me before Chief Hikaro. I thought I was dead for sure, so I... So when you met the Tanakh chief... I'd kept my ears open as the Tanakh dragged, and I heard mutterings about a kind of trial by So, when they flung me at Hikaro's feet, I'd called the Kulrut, thinking that by winning I could request my life, or even the other Tanakh howled, but Hikaro stared them down. Evidently, he allowed me to participate in the Kulrut. You said the Kulrut is a Tanakh... Yes. But it doesn't pit men against each other, at least not to... Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the strongest, believe me. It is no easy machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you... Do you? Well, then you have my respect.
I had hoped for freedom, but... well, that... You wound up serving. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. The word itself refers to a kind of protective spirit. In practice, marshals are Hikaru's roving lawgivers, part magistrate, part judge. I won my place among their ranks and served as honored to men, but many Tenakth still spat on the ground. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must... The truth is, though, the Karja speak it too. I can't blame the Tenakth, right? So then... Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans, always at war, constantly. Hikaru and the marshals have crafted a devil. Now he looks to the future. Who knows? The Karja talk about Hikaru as... The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like them. I think that if you were fortunate enough to meet him, you would find that he only wants the best. I hope you do speak to him. So, that's my story. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tenakth, there's a lot... Are you glad to... Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping or sipping wine from the... But I have another goal. As someone who knows the Tenakth, I'm in a unique position. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish... The Tenakth don't seem that... They're not, as a rule. Chief Hikaru knows that survival, even if that change means putting aside... You asked why... I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, calling down storms, poisoning the water. The source of it all has gone west. I've seen the signs. And I've heard an army of demons vanquished by a red-haired chick. The burden of your task is written across your face clearer than anyone. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tenakth lands. A task so important, and it's just the 2 of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hikaru knows the West better than anyone. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner! Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tenakth can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No! The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. The Karja have opened the gates. As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Hear me, marshals! You who claim to be Tenakth! Regalla. Chief Hikaru's biggest mistake. A rival whom he should have killed.
have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hikaru has betrayed us! The embassy is proof! And all of you marshals are his accomplices! For this, I condemn you to death! You'll need more than toothless threats to intimidate us, exile. Lancers! Form up! They're riding machines. Where'd they learn to do that? Silence. Vashav, come with us now, or not at all. Archers! Light them up! Get to cover! Archers! Keep them back! Left flank! To the Karja! Run them down! They're not gonna make it. Open the gates! Open the gates! Open the gates! Karja! Stand your ground! Fire at will! I don't have a shot! What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! Get ready! Stick to cover! Archers on the ridge! Here they come! They're onto us. All right, try that again. Ammo for you. Drawing on her now. She felt that! Down!
बहुत झगड़ा है भाई इस सीन में। भागो भागो, एक जगह रुको के मिल जाओ। Okay, better. वो अगर फायर एरो ना तो उनका बम फोड़ दो, बम पे हट जाए। फायर एरो नहीं होंगे ना, वॉरियर बो नहीं है। कोई बात नहीं। Cut them all down. गेम का लोड आउट नहीं आता। क्या? वो चढ़ गया भाई, दीवार के ऊपर चढ़ गया। अरे भाई मैं तो बीच में जब मैं खेल रहा था मैं इतना पगलाया, मुझे भी आ रहा है। इसमें भी मैं सबके हॉर्न पे मार रहा था, मैं लेग कर गया। यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वाइट ओह Just you and me now, Varl. We've survived worse. We got this. भाई भाई बहुत सारे नहीं, व्हाट? अरे इसमें हैवी अटैक ना मारो, भागो बस। थोड़ा बहुत तुम्हें मारना है, अपने आप थोड़ी मूव फॉरवर्ड हो जाएगी। We got this. अरे इनके वो फोड़ो, पॉइजन है तो इनके बम पे वो भी पता है पता है पता है पता है, चिल। क्यों लगा था भाई तुम पे? अरे इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? जब इसको मारोगे ना तो भाई ये बिल्कुल बेंड हो जाता है, ऐसे मसल की तरह बिल्कुल बेंड हो जाएगा भाई, अजीब लगता है भाई। Enough! You, Outlanders! I'll skin you both! Chief, grant me the honor of this challenge. Granted. अरे देखना अभी
फ्री। ये वाला टूल जो तुमने ट्रेलर में देखते हो ना, यहाँ से मिलता है। हाँ मिलेगा मिलेगा। और ये तो फ्री में पेट पे खाया भाई। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा भाई, स्टोरी देखोगे ना भाई, फोकट में मिलेगा भाई ये। रैगडॉल। You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break through his shield if I damage it enough. वो यूज कर, हाँ ये बम यूज करो। Gotta get through that shield. There! Now's my chance. That won't stop me. वॉरज़ोन में रीबर्थ आ रहा है। रीबर्थ तो है उधर। रीबर्थ तो पुराना वाला। खाली पता नहीं। सही है। Give it up! His shield's regenerating. अरे गजब पकड़ो लिए। Break his guard. Shield's gone. He's vulnerable. सोवरेन फैंटम आ रही है। You're not stopping me. Your turn. Come down here and face me. No! Huh? It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades! Mark this day! Today you have decimated the Marshals! Slaughtered the Karja! So begins our war on Hikaru. Move out! Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. I got you.
It's salvage time, boys. Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The Marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Fashav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Fashav called Regala a rival. Yeah, I reckon he should have. She's up. Her attack was coordinated and precise. They knew the lay of the... and they knew Fashav was going to be handed over. If the Tenakth weren't... she must have spent months gathering... They had to have made camp nearby, somewhere they could lie low until the About Fashav... The man survived for years out in the west, only to die just short of the... It's a cruel end for... There was more. He spoke of advocating for lasting peace between... Too late for... What will happen? His body will be carried as a cousin of the Sun King. He will be accorded a... No soldier could ask for... It's too bad. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well... No, I'll make sure they're given proper funeral rites. Do you think the Karja will take... Seems like you'd have common ground. An expedition of the Karja army would be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by... You said the Tenakth. What can I expect to find between... Well, as I mentioned, you've got a stretch of... And then New Taru far past that, their territory is split into 3 clans. Desert... Right. I saw their... The Desert Clan is closest. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, somewhere beyond the desert and the territories of the other 2. You don't sound... I've only heard during the Red Raids, the Karja army tried to... But the United Clans rose up against them. Forced... So no one except the Tenakth really know... Maybe the scholars do. Scrolls have to be filled with something. You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between... That's right. They're a peaceful bunch. At least more taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers... Make no mistake, they have a... When the Karja were pushed back, their warriors chased ours through the burning field. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far... If they're so peaceful... Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. So you'd think that'd make them open to trade, but... This area is no... That it is.
The Tanakh used to attack anyone past Barren Line, but after Avad overthrew the Mad Sun, he reached out to the other tribes to offer. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace. Karja and Oseram have been striking out into the air. But now, it seems like Regalia. Well, I'd never call no man's lands. The ancient ruins of the southwest are remnants of some forgotten. You said there were others who went out when the... Well, in addition, there were a couple of other parties of Os. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest. Not sure if they're exceptionally. I need to be on... Then I wish you luck. The gates will... And don't worry about your friends. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. भाई कितनी देर का बात चली थी भाई? बहुत होती भाई। क्या सामान उठा लेना। बहुत सामान मिलेगा। So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spires should lead to Silence and Hades. And just maybe, a backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. The woman who led the ambush, Regala, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock the rebels? जाता भाई उसको। Good spot to test the shielding. If I climb down, and I can glide. Wow, textures. भाई उस बॉक्स में कुछ हुआ ही नहीं। डैमेज आ रहा था कभी। वो तो मुझे रेड पे चढ़ा था। हाँ पास में वो है फूड मिलता है वो कुछ हंटर बेस है आई थिंक ये राइट साइड में जाके चेक ओके हाँ ये ऊपर ऊपर साइड में ये देखो ऊपर लिख रहा है Guess I can leap off just about. This must be the इससे बात कर salvagers हाँ I ये met in बढ़िया बंदा Barrenlight. है Looks like something's going on. If it isn't the savior of Meridian, and of my very own operation. Laren, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Nasty business. What the Tanakh did back at the embassy. But everyone in Barrenlight is thankful you drove them off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden. Dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? I'd be curious to take a look at it. Of course you would.
And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Larend can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. So you get a prize if Karif picks your armor? A big one. And I finally have the perfect design. I just need the right parts, and fast. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. I think I can handle that. Ah, thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. Counting on you, Aloy. Aloy. I'm working. Didn't find what you were looking for? Make this armor work. अरे उसकी पता है वो जो उसकी बंदे की शक्ल थी ना वो ना करो, वो एंड गेम कंटेंट है, वो नहीं खुलेगा। ये जो बंदे की शक्ल थी ना भाई उसकी उससे मिलती थी। ये क्या नाम है, फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। ये कर लो, खोलो खोलो, एक पास में बहुत बढ़िया चीज है। ये जो बिल्डिंग दिख रही टूटी हुई, ये नीचे 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 नीचे, यस ये कर लो। टॉल नहीं खुलेगा वो वाला, बोल रहा हूँ ना, वो एंड गेम कंटेंट है, वही तो बकचोदी है। पहला टॉल ही नहीं खुलता है। गजब। क्या है ऐसा उसमें? क्या है कर रहे हो? यस नाइस। मैं 1 घंटे तक दौड़ रहा था उसके जगह पे, मेरे को नहीं मिला, मैंने गिव अप कर दिया। I can refill my pouch with these later. There's a lot of ancient wrecks out here. Must have been a huge battle. The old ones. They gave everything they had to slow down the Pharaoh swarm. To buy Zero Dawn time. Oh, it's a rebel sound. वो जो पीछे बंदा था ना उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेना, तेरे को बढ़िया थोड़ा ठीक ठाक। I'm still getting a city for my focus. Sound. The Tallneck must be close by. Overriding it should give me data on the surrounding area.
like a satellite dish. If I can climb it, I should be able to reach that tall neck easily enough. That machine could swoop down on me if I'm not careful. तुम कहाँ से? कैसा लग रहा है इसका कॉम्बैट? कॉम्बैट इसका ज़्यादा सेंस बनाता है। पिछले वाले में तो तुम इनका सामान तोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रैंडम इसमें परफेक्ट ड्रॉप है लेकिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और बुलेट टाइप। Pain subsided. भैया एक ही मारना था। ओ भाई गजब गजब भाई साहब 200 HP पे मारा भाई इसमें मेरे को। अब ये भी बचा हुआ है अभी। तो बड़ा सा भी कुछ घूमा था वहाँ पे। हाँ वही उसके ऊपर चढ़ना है वो हमारा फास्टर पॉइंट है। Frost would do a lot of damage. ये क्या हुआ? भाई पीछे पीछे आ रहा है। अगर तुम्हारे पास पॉइजन वाला मारो। नहीं गलत जगह आ गया मैं। ओके ओ okay, that's one way to do it. What is that? A power generator?
तो हेल्थ मिली उसको मारने से। I was wrong. ये वाला वो तुम कर सकते हो, ये वाला कर लोगे। अब मेरे को पहले सेटिंग्स कम करना है भाई साहब। कम आ रहा है क्या FPS? 20 FPS आ रहा है मेरे को। हो। 8 FPS बढ़े। ओ भाई कितना डिफरेंस है, शिट। वो तुरंत कलर चेंज हो गया उसका तो। अरे ऊपर जाओ ऊपर जाओ। रुक जाओ, क्वालिटी सेलेक्ट कर रहे थे भाई मेरे को। मीडियम ट्राई करो। हाँ अभी 80 FPS आ रहा है। पहले अल्ट्रा पे करे थे क्या? हाँ अल्ट्रा ही था तो। अल्ट्रा हाई भी है। हाई भी सही रहेगा। हाँ भी ठीक है। हाँ ये दूसरी जगह पे और ज़्यादा भी देगा, 80-90 तक भी जाएगा ये। जहाँ पे थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग का होगा ना वहाँ पे फिर हट देगा। 2080 रो दे रहा मतलब भाई समझ जा आपके गेम कितने एडवांस हो गए हैं। 2080 Ti भाई। हाँ वही 2080 Ti रो दे रहा है तो। नहीं एक्चुअली में वो उसके कारण भी नहीं होगा, मेरा प्रोसेसर भी वो करता है ना इसमें, बॉटलनेक करता है। नया लगेगा तेरे को, सबको तब नया लगेगा भाई अब। Climb any higher, but looks like this thing is working. If I can figure out a way to turn the power back on, I might be able to move things around and find my way up. ये क्या जम था ये? This must have generated power at some point. It's dead now. चला आसपास घूम कोई जानवर मार रहा है ये। सही बात है। ये वाला टॉल नेक नहीं है, ये वाला टॉल नेक तुम खोल दो। आई थिंक इसके जस्ट बाद वाला जो मिलेगा वो Power cell. Disconnected from the main power line.
This should get that generator below the dish going. हाँ There's the generator. Bet this power cell can get it running. Power's back. I should check that console I found earlier. Let's see what this thing does. Looks like I'm up. Error. Dish alignment incomplete. Motor function impeded. Light is worse. If I can find a guy up there. अरे खोल दिया Maybe खोल दिया this everywhere. Shear's jammed. I'm still not high enough to reach the tarmac. Untangle the dish. Let me climb higher. पे एरो मारो हाँ नीचे मारो Actually worked. भाई बेस्ट पार्ट तो ये है कि इतने सालों बाद भी ये चीज़ें एटलीस्ट चलने की कंडीशन में भाई should be able मोटर to get वोटर to चल that रही है tarmac ये तो now. मुझे समझ में किसी को लॉजिक समझ में नहीं आया Found the right spot. Looks like I might need to glide off the tarmac. Just gotta time it right. Gliding in. There we go. I know where I am. It's all right. Almost done. I'll mix some mapping of other machines. इतने सारे मशीन के असिस्ट क्यों आ रहे हैं मेरे को ये बिग बॉय इज डूइंग योर जॉब सीरियसली उसको जाके पैट पैट कर दो सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू अबे ट्विच भी इतना अच्छा दिख रहा है वे डिस्कॉर्ड पे स्लो आता है बिल्कुल स्लो आता है नहीं तो उसको देखने में ज़्यादा सही क्या स्लो क्या आता है 10 सेकंड डिले होता है 3 सेकंड भाई आई थिंक अब कम हो गया तो तुमने नया नया पुणे में चालू किया था ना तब काफी डिले अरे तब तो भाई ये इसके ऊपर से ही हो सकता है हाँ इसी के ऊपर से ही जा सकते हैं तो बहुत झंझट लिंक चढ़ना हाँ लेकिन फिर जब तुम यहाँ का फास्ट ट्रैवल पॉइंट अनलॉक हो जाता है ना तो फिर वो कर सकते हो वो पजल टाइप का होता है हमेशा तुम वापस चढ़ गए हाँ ये राइट साइड में जो बकवास आई हुई है वो हट जाए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ अरे मुझे 2-3 बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट पता है स्क्रीनशॉट के थोड़ा गेम आगे प्रोग्रेस होगा तब बताया क्वालिटी अल्ट्रा हाई फिर स्क्रीनशॉट लो
मैं नीला क्यों हूँ? ओ इधर जाओ, इधर वहाँ पे वो है फार्मिंग एरिया इसका, ये थंडर जॉक का। यस, दिस वन। अरे ये कर लो, तेरे को यहाँ से आप वो मिल जाएगा एक ठीक ठाक आर्मर शायद। सामान क्या लाना था? हाँ Huntress! You're back! Aloy! I'm working on it. अरे I should get going. Good luck. Did you find those shell walkers, Aloy? कहाँ है भाई शेल वॉकर्स? व्हाट? क्या 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 करना है फिर से दिखा। Any new? I'll get them. Yeah, of course. Yep. साला इसके पास से खरीदूं क्या? शेल वॉकर कंटेनर। अरे मिल जाएगा, खरीदना क्यों है इसके पास से? तो वो तो बता नहीं रहा ना कहाँ जाना है, प्रॉब्लम ये Didn't है। find what you were looking. अरे नहीं नहीं, वो उस पे वो खोलो, क्वेस्ट मार्क करो, शायद दिखाता है। रिक्वेस्ट ही मार के। अरे तो नीचे है ना, नीचे जाओ। ये देखो, ये कहाँ गया? अरे इधर भी कहीं था। चलो इधर सब कर। अननोन रेलिंग मींस I might want to read that contract before going on the hunt. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट भाई? चलो अभी तक कुछ नहीं दिखा रहा भाई बहुत। One shell walker
फ्रॉम द डेजिग्नेटेड मशीन कौन वो है? तो किधर है डेजिग्नेटेड मशीन कौन वो है? आखिरी में लिखा है प्लीज डोंट डाई। हाँ वो तो देखिए। Okay. So that was मिल गया ना? मुझे याद है क्वेस्ट में वो हाईलाइट करता है। हाँ क्वेस्ट में जाके किया। Huntress, you're back. ना ना भाई साहब इतना दूर, रास्ते में ये भी पड़ेगा। They're trying to corner those Oseram. Attack! What the? What? Just surrender. That's No way! We trained. If it isn't the hero of the day. Are you all done? We've been working No Man's Land. I was hoping to get back to Barren Light by the time they opened the gate, you know? After seeing as how we almost got minced. I'm guessing things didn't go... You could... It's not like No Man's Land, but I didn't think I'd have to worry about the Sanak thing. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light... We ran across some ruins nearby. Thought we'd take... But the place is full of weird red... Can't get through this stuff. First thing tomorrow, though, we should probably send a message to our crew down at Jagged Deep. Jagged Deep? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap it. And that's my cue. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into... Oh, let's hope not. Jagged Edge था शायद उसका नाम, उसमें था ये। An old world ruin. I wonder what's inside. Looks like this door's locked. Maybe there's another way in. Okay, let's see what we can find around here. This crate might be useful.
crystals growing on the wall. I don't think there's anything I can do about them. Perfect. Keep this green shine for later. Well, without a way to get through those red crystals, there's not much I can do. I better move on for now. Okay, let's get this crate out of there. Must be caught on something. Some kind of lock for the door. Looks like it needs power. I'll dry off. Eventually. There's some kind of device here. Looks like this thing needs power. This could be useful. क्या चल रहा है? और पजल ये वाला I wonder what makes these crystals grow. Ugh. अरे तुम गेम तुम्हारा गेम अटका भाई तुम हवा में चलो
Wonder how I can get in there to get it. अरे इस दीवार के पीछे है। हाँ एक जगह दीवार तोड़नी होती है तुम्हें। अरे एक जगह नहीं भाई, वैसे दीवार तो बहुत सारी तोड़ी है मैंने। If I remember right, तेरे को भूल गया, सॉरी। आई थिंक बाहर से जाना है तेरे को, दीवार तोड़ेगा वो। मुझे लग रहा है कि वो रेड क्रिस्टल जहाँ पे है ना, वहाँ पे कुछ मार के फोड़ना पड़ेगा दीवार। नहीं नहीं, बिना रेड क्रिस्टल के ही फूट जाएगा। तो कोई जगह दिख नहीं रही है फूटने की। अरे यार पीछे से कहीं जाना है यार, मेरे को भी याद नहीं है लेकिन रास्ता वहीं से है। मैंने क्योंकि शुरुआत में अच्छा नहीं, ओह छोड़ दो। आई थिंक हाँ रेड क्रिस्टल ही है, लेकिन ऊपर वाला ले लोगे तुम शायद। नहीं ले सकते क्या? ये नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, छोड़ दो। इसी के जस्ट ये पीछे है। हाँ स्पीयर अपग्रेड पे खुलता है, ये छोड़ दो। आई थिंक ये रुइन नहीं होगा। शिट मैं भूलने लग गया। क्या? अरे मैं भूलने लग गया, मेरे को काफी कुछ याद था। इस एरिया में मैंने बहुत गेम वो घिसा है, ग्राइंड किया है इधर बहुत मैंने पैसे के लिए। तेरा गेम बहुत अच्छा था, काफी बुढ़ा गया तुम। वेल 27 साल के हो रहे हैं वाले हैं इस साल, बुढ़ा ही गए, अब क्या ही बोल रहे हैं हम। तीन साल और हम लोग ऑफिशियल अंकल हो जाएंगे भाई। ऑफिशियल थोड़ा ऑफिशियली नहीं है लेकिन ठीक है। उसमें स्क्रैपर भी है, स्क्राउंजर भी है। I can use shock ammo. लेकिन
adventurers out there, stranger. My wares will help you on your hunt. Greetings, stranger. A fresh wind blows in your way. Brighter day to you. Today's a good day. जाने देना। Outlander, forgive my sunshine less welcoming kin. We're not used to your kind. A brighter day, stranger. Pretty sure that's the passage Lauren's contract mentions. Shellwalkers use this passage regularly, and Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Might be a good idea to place some traps on the road first. Catch the convoy by surprise. अरे इसमें ये भी बेकार हो गया बे ट्रिप कास्टर अपने हिसाब से ही लगा लिया उसने I should rest up. Wait for the convoy. अरे हाँ इसका रेंज कम हो गया भाई रेंज कम हो गया है थोड़ा पास से लगा रेंज छोड़ो वो अपने हिसाब से कहीं पे भी लगा ले रहा है कहीं पे नहीं लगता भाई ये तो चौधी है कहीं पे नहीं लगता है गेम बहुत चेंज हो गया है नहीं पहले अपन लगाते थे ठीक है पहले अपन लगाते थे कहीं भी घुसा तो लग जाता था अभी ऐसा नहीं है नहीं तो डिस्टेंस पहले भी था भाई अभी ऐसा लग रहा था कि वो वेस्ट हो मतलब पत्थर पे नहीं लगता ऐसा बोलो ओ ये भी है और सेकंड चीज लिमिट कर दिया भाई पहले तुम अनलिमिटेड घुसा सकते थे भाई जितने बना एक बार में बंदा पूरा ठास दिया अभी ऐसा नहीं होता तुम खुद इससे भी मर सकते देखो शॉक हो गई एक बार में एक ही रेस्ट एट कैंप Oh, stop. अच्छा तुमने ये ऑन कर लिया क्या परमानेंट येलो येलो दिखाने वाला नहीं Convoy. It's here. आई नहीं क्या कॉन्वॉय मैं अंधा हूँ क्या अबे पीछे आई थिंक नहीं मैं शायद गलत कर दिया वहीं सही जा रहा है वो वहाँ पे आ गया वो पत्थर भी गिरा सकते हो ये If I find where these machines are made, I might learn how to override them. अभी तक एक भी कोल्ड रन नहीं मिला There's only one Shellwalker with them. Die. अरे 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 भाई
भाग गया भाई वो अरे वो क्रैब की बेस्ट पार्ट वो अपना शेल वापस से जोड़ लेता है भाई उठा के कॉमेडी हो जाता है भाई वो बस How cute. ऐसा नहीं लग रहा तुमने उसके कपड़े उतार कपड़े तो उतारे मैंने उसके हो गया अरे वो उसका क्लॉ तोड़ दो क्लॉ शायद वो है येलो येलो Got a piece of it. इधर वेट कर रहा था उसके मरने का I should salvage what I can. Leave the plating for Leyland's crew. Plenty of salvage for me. Huntress, you're back. I took Vonda, Rendor. Per our contract, this will definitely help me. What? Well, I realized an armor made out of Shellwalker, but with just a few minor additions, if you'd be willing to take on it. What do you say? What else? Alarm antennas? Strong? Supple? We picked out a herd of scroungers. I'll, read through the contract. Best of luck. Tell me more about these. I was thinking, Scrabber jaws are powerful. I could use them to strengthen. My crew spotted a pack of them not far from here. I guess I can. Fantastic. I'll be waiting. I know I can make a perfect armor. Just need the right parts. .53% की कंप्लीशन ये भी बहुत 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 कुछ है अब तो
The charger herd Laren's contract mentioned should be close by. There are the chargers. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. Cauldron to learn how to override machines. Scrappers. Right on schedule. Die after dodging. The charger herd Laren's contract mentioned should be close by. There are the chargers. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. was okay. अच्छा That's one.
अरे वो जो ब्लू ब्लू चमक रहा था ना उसमें मारोगे तो ज़्यादा डैमेज होगा। That should do it. Time to take these parts back to Larend. Oh, hunting grounds. No one wants to play some Strike? No. Anyone? Strike can go suck it. Don't call me. And two, I don't know. I didn't put it there. क्या क्या है तेरे पास दिखा? I think I can suggest something. पैसा भी अच्छा खासा है तुम्हारे पास। नहीं नहीं ये ना लो, इसमें थोड़ा लर्निंग कर्व ज़्यादा है। अच्छा माल है लेकिन इसमें लर्निंग कर्व बहुत है। वो फ्रोजन वाला दिखाओ, कुछ फ्रोजन वाला है क्या? नहीं, फ्रोजन वाला है मेरे पास ऑलरेडी। लॉस बिल्डअप वाला फ्रोजन है मेरे पास ऑलरेडी। मतलब इसमें नॉर्मल एरो भी मतलब एक मिलता है शायद हंटर वो, जिसमें वो भाई मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ भाई, मैं वर्ड ही भूल जाता है। बक नहीं याद करेगा। Many thanks. Come back anytime.
Or did you miss that? इसमें आई थिंक एक सेटिंग है कि जो तुम्हारे वुड्स है और वो जो तुम्हारे हेल्थ है वो डायरेक्टली तुम्हारे स्टैश से कनेक्ट होता है, तो तुम्हारा जब हेल्थ वो बेरीज ख़त्म हो जाती है ना तो स्टैश से तुम रीलोड कर सकते हो विदाउट गोइंग टू स्टैश। चेक कर लेना एक बार। This must be the clearing where Conover says he saw the eclipse. Bloodstains. It's a good place to start as any. Pretty sure this is where Conover killed that guard. Maybe my focus can tell me if there really was a third person here. I see plenty of tracks from the Karja search party. Not helpful. Broken branches. Was someone up here? Faint tracks leading away from barren light. I should be able to follow them with my focus. Let's see where this leads. Maybe Conover wasn't lying after all. Lost the trail. There's too many machines walking around. Maybe I can pick up the tracks once I'm past them. A lot of it. Whoever the runner was, this machine must have slashed him. Should be easy to follow the blood trail with my focus. Looks like we're headed for that bridge. Set up a lookout down here. Bandages. Looks like the runner tried to treat their wounds before they went on. I should be able to follow their tracks. Where did you go off to? That must be close to the machine site Laren's contract mentioned. Spiders, just like Laren said. I need their antennas. If I shoot them off without getting spotted, everything should go smoothly. Got one!
fast enough. They've called for reinforcements. Antennas I shut off. I need to find any antennas I hit. Just need one more of these. I should take these antennas back to Larend when I get a chance. I'll fill up while I can. The trail ends here. Must have climbed up to that cave. With that injury, I'll bet he's on his last legs. This looks like a good place for someone to hide. Yes! What are we supposed to do now? We stay on track and make our way out west. If we give up now, things are over. We have to find Vezra. In his shadow, we will find strength. We don't know Larvik's dead. He hasn't shown at the rendezvous point, so either that fool guard killed him, or he's lost his nerve. We'll just have to blast our way through the gates. And then what? Rayad was our only link to Vezra, and now he's dead too. We'll track Vezra if we have to. But first we have to get past Baron Light. Next change of guard, we go in fast and loud. Conover was right. I have to stop them before they hurt anyone else. The shadow will rise again. The new dawn is coming. Avad will suffer. That will be a good day. Over there! You want to start chasing them? Raise the alarm! We have to mobilize! Right here! We'll find her.
And I'm sure there's more of them outside. I better be careful. I see her! Come back, right? So it's you. Plus 5,000. Takes care of that. It sounds like there's more Eclipse beyond the Daunt. If this Rayad was their only link to them, he might have a focus. It could tell me where they are. I'm guessing that's Rayad. यार अभी तो आया था यहाँ पे नहीं था ये. I was right. Rayad has a focus. Loyal Eclipse. If you're seeing this, it means you've left the Sundom in search of something to follow. Your journey is almost over. Follow the sun beyond the gates of barren light. And bask in the gloom of future conquest. The new empire awaits. I'll have to pay this Vezra a visit and crush his new Eclipse empire before it begins. There's coordinates here, out past Barren Light. Ryad's mask should be enough to prove Conover's innocence. I better take it back to Barren Light. When we fought the Eclipse back in Meridian, I thought that'd be the end of it. Guess I was wrong. Looking for a real challenge? Look alive, soldier. She's back. Aloy, did you find anything? Eclipse fugitives were camped out on the other side of the forest. And they were getting ready to fight their way through Barren Light. You just helped save a lot of lives. Aloy, you know I believe you. But the other officers, they may not be convinced by your words alone. If they need proof, show them that. And tell them this man risked his life to expose and eliminate an Eclipse spy. Huh. I guess you are his savior.
Congratulations, soldier. You're a free man. I'll have you out of there before sunfall. रात हो रही है. I'll make sure this gets to the right people. That's it then. The end of the eclipse. Almost. The trespassers you mentioned, the ones who got through Barren Light weeks ago, their leader's dangerous. And he's out there, in the Forbidden West, building up an army. Sun and Shadow, you're going out there to stop them, aren't you? I'm gonna try. I want to help. I can fight. I know you can. But you've been through a lot. You should Once be you're out of that playing cell, Need for Speed you should Heat. enjoy your freedom. You've earned it. Take them out, Savior. What? You should the bot. ये तो rhyme. गाड़ी चलाऊंगा. 75 रुपए का हीट खरीदा है. Yes. Come on then. No one's up for. सोच रहा हूँ Unbound भी खरीद लूँ. Friend from the Nora. Come and Let's buy. play some. Unbound कितने का मिल रहा है अभी? 10 से 300 रुपए. तेल खत्म हो गई. 350. एक दिक्कत है लेकिन सेल तो 21 तारीख को खत्म होगा. हाँ. Another day, perhaps. Oh, perfect timing, Huntress. Got all the parts you want. I see your reputation as a hunt. Here's your payment. Looks like you've got everything you need. Actually, our scouts spotted a fuse Inscription. fire like a blazing forge. कौन सा गेम है भैया? If I had it, my arm. What do you think? I'll check the details. You भाई won't Lethal work. Company 480 रुपए का हो गया. I should get going. Good luck finding. I promise. These are the last parts we'll need, Huntress. अरे किधर थी? आपका एल्डन रिंग कहाँ तक पहुँचा? मार दिया उसको. एल्डन रिंग खोले भी नहीं है भाई. तो आए तो नो भाई क्या दिन भाई एल्डन रिंग खेलेंगे. 10 मिनट शाम तक. I see machine tracks. Might be the Fanghorn I'm looking for. सही हो रही है. There's a lot of different machine tracks here. I'm gonna need my focus to tell them apart. Bristleback tracks. Not what I'm looking for. No luck. These tracks were made by a charger. भाई साहब मैंने गलती से वही सोचूं इतना सब शार्प क्यों लग रहा है साला विंडोज में मेरे को. सारा गेम शार्प सब शार्प. इंजीनियर में ऑन किया था. GeForce Experience. चलो वैलो इशू. जल्दी बोलो. राइवल है. राइवल बाहर घूम रहा है, भी आएगा थोड़ी देर बाद. तो ग्रुप जाओ यार. अभी मैं भी हीट खेल रहा हूँ यार.
10 मिनट शांत रहो, शांति रहो, निकाल दो बर्तन वो। Found the Fanghorn tracks. The trail looks fresh too. My focus should help me follow it. There you are. Let's see where you lead. Fanghorn that breathes fire. I think I found Laren's new friend. I'm gonna have to take it down. Can just stay still for me, huh? I'll catch you eventually! Gotta use something other than frost. Fanghorn's fast. Only way I'm catching up to it is on the back of a machine. That's a lot of lance holds. like Laren's almost ready to make it armor. Here's that Fanghorn you wanted. Yes! This is it! Unless... It's about time you got started, isn't it? You're right. Can't make the Maybe you'll come back around. I can try. So, you here to trade, my friend? मैं ये किधर डिस्कॉर्ड पर अटक रहा है बीच-बीच में। वो मैं भी देख रहा हूँ डिस्कॉर्ड अटक रहा है, मेरा भी अटक रहा है। अटक जाता है। Oh, not buying anything. ठीक है। ये स्किल ट्री है इसका। कितना बड़ा है भाई? 6 स्किल ट्री है। ऐसा स्किल टाइप का है क्या? हंटर, असैसिनेशन ये सब वाला? हाँ कह सकते हो। स्टेल्थ भी है, हंटर भी है, फिर वो भी है। हाँ भाई असैसिन स्किल जो डीसी है किसी में।
बॉट्स वगैरह का एक भी है और बॉट्स वाला क्या नहीं, बॉट्स को ज्यादा कंट्रोल करना पाएगा। बॉट्स के साथ दुनिया भर के एक्शन कर पाएगा। क्राफ्टिंग भी है ना इसमें। हेलो हेलो। अरे डॉस इज हियर। नमस्ते भैया। बहुत जय श्री राम। जल्दी नहीं आया तुम। ओए मैं दोस्तों से बात कर रहा था। अरे एवं एक चीज पूछना भूल गया, चलाए हम अपना गाड़ी नया कि नहीं मिला? एवं ने एक्सपीरियंस अपना बताया था। क्या हुआ? एवं बताएगा। एवं अभी एवं गेम खेल रहा है। फुल फोकस में है क्या? सब फुल फोकस में है बहुत ज्यादा फोकस है। फोकस PH reset and you will able to reduce your skill points। अच्छा ऐसा टाइप का है। तुम क्या डेमो कर रहे हो? अरे अभी कर रहा था भाई मैं, तो साइड में